My dear students, teachers, I'm totally blessed to be a part of this webinar. It is my proud privilege to be with you all today to share my experience and my knowledge on cybersecurity and wellness. Before I start, I would like to thank D.A.V. Department of Commerce of D.A.V. Century College for giving me this invitation to present my views and my expertise, my knowledge with all the students of BCom. Before I start, I just want to say something to you all. You know, I remember those days when I was student of BCom first year, and there is one person who is very common, and the face is very much similar, and the person is still heading that institution and is there. I would like to thank one person right now. She is, you'll have to guess, she is my mentor, my best friend, my inspiration, my best advisor, and my second mother. You call her as HOD Commerce Department or Statistics Professor, and we all know her by the name of Dr. Archana Bhatia. Thank you so much, ma'am, for all that what you have done for me. And my association with ma'am started in when I was in class 11th. She is my idol. She is my mentor. I can't means I don't have words to express my gratitude. When she said, "Ma'am, Bhavna, you have to take session," I within a friction of second I accepted that, "Ma'am, I can't say no to you. Even I'm in my office and I'm taking this session, but I don't have courage to say even a single no to my mentor, my say my God." So I'm always thankful to you, ma'am. Thank you, Bhatia, ma'am, for giving me this opportunity. And I'm thanking Dr. Savita Bhagat, officiating principal, and that she has given the permission for conducting such a nice webinar, which is the hot topic right now. I thank Divya and Vandana and Niti for introducing me in a very nice manner. Thank you all. Now let's start with this cybersecurity. Before I start, students, I want to tell you, I just want you to chat, write one word which relates you with the cybersecurity. I'm giving you 30 seconds to write here. There are 100 participants. I need one. Cybersecurity means what to you? I need your answer on chat. Data, Nirmal, very one. Very good. Personal information, very good. Next, come up fast. Privacy, very nice. Very nice. Next. Data security and privacy, security, fine. Next, personal information, very nice. Security, nice. Privacy, nice. Security, cybersecurity means protecting data from hackers, protection of data, stealing of data, data security, security of personal information on cyber. बहुत ही बढ़िया यानी कि आप सबको मालूम है कि हम साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं ठीक है तो आज की प्रेजेंटेशन का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इट इज टू अवेयर यू नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग टुडे आई एम हियर टू अवेयर यू आई एम नॉट हियर टू स्केयर यू what I will be telling you, just keep it in the mind. Have a pen and pencil with you and with a notepad. Whatever I will be telling you, you just have to note down because the generation, the Gen X generation, which is there, that means the early 20s, which you are into, you are so popular on your social media channels and you don't know how to behave, how to act, and how to work on it. And unknowingly, without knowing the consequences,
we are just gotten trap of this kind of uh, say cyber act or cyber crimes. So some of the possible preventive measures I will be telling you today to you will be can avoid to getting victimized for a cyber crime. So let's start. We all have internet, smart gadgets, and now are the integral part of our life. We can't even think of our life without mobile, without laptop, and there are now Alexa is also there. So many things. AI is into the this, and we all are aware of. So let us understand what do you mean by cybersecurity. It's a very short video which I am playing here. Cybersecurity? Is my video voice is? Break the word cybersecurity into two. Yes, ma'am. Divya? Yes, ma'am. Is the video of voice of video is visible audible to everybody? Yes, ma'am, it's audible. Thank you so much. You will find it is made up of the word cyber and security. The dictionary defines the word cyber as relating to or involving computers or computer networks as the internet. So in other words, cyber is essentially anything related to technology. This includes computer systems like laptops, servers, and phones. Computer networks such as the internet or local area networks. Computer programs such as operating systems and user applications. And data like your personal assets or important files. So with an understanding of what cyber is, let's look at what cybersecurity is. Cybersecurity is the protection of these computer systems, computer networks, computer programs, and data against hackers. When systems are protected, it is known as system security. Patching is an example of system security. When computer networks are protected, it is called network security. A firewall is one part of network security controls. When software programs are made secure, it is known as application security. When data is made secure, it is known as information security. And finally, cybersecurity is incomplete without the end user. So you and I play a big part in cybersecurity. Okay. I believe this video has given you a brief that cybersecurity is a combination of two words, cyber and security. And we need to be very careful. We all are involved in it. We need to secure, we need to be very vigilant, and we need to be aware of what we are doing. So there, and this is the second term which I want to introduce with you all, that is cyber law. Before cyber law, I just want to tell you what is cyber crime. Cyber crime is a generic term that refers to all the criminal activities done using the medium of computer, the internet, cyberspace, and the World Wide Web. Now, what do you mean by cyber security? It means protecting information. You all are aware of, and you all have given this privacy, data, everything. You just not told me that data security, cyber security means this to you. So, means secure means that, say, why we have a lock on our house when we are moving out. A very simple reason that we want to secure our house from the outsider or from anyone who we don't have aware of that he is the known person to us. We give key to the person who is aware to us. Otherwise else we put a lock on our door and we close the door when we are not at the home. So cyber security is basically a way wherein you have to secure your area when you are on the cyber
space. Cyber law. Now, this is very important term. I'm here again. I'm repeating the statement. I'm here to aware you, not to scare you. My complete description will be on the cyber laws. I will be stating so many cases, and I will be stating the laws here because this generation, especially the students of this age, they are not aware of the laws which have been created. So I will be this cyber law is represented by Indian IT Act 2008. These are the laws which say we are not we you all use WhatsApp, yes or no? Just say yes. Yes or no? We all use WhatsApp. And anytime we receive any information, we without thinking it, we pass it to the other person. So passing it, I'm just giving you a very small example. This is also comes under the cyber law, and it's a punishable offense if you don't know the integrity of that particular text. And if you pass it on to somebody, you are under the surveillance. So be careful. Nice. Now, why we do cyber? See, everywhere, everything. Why we have thief? Why we have cyber? What is the motivation behind the cyber crime? Money. Sometimes kids are doing it just for the curiosity. I can hack the password or not. Revenge, if you want to do it for fun, okay, I am so perfect, I can do it. I can hack my mom's, I can hack my school, I can hack my college wi-fi, I'm the boss, I'm so knowledgeable. So just for fun also. And praise seekers, see, I'm so intelligent, I can do this. So these are the motivation behind the cybercrime. So what are the trends in the cybercrime? Huge increase in this use of internet and smartphone. In this pandemic time, I believe everyone, whole world is on the online. This online, this we can say this edtech. Edtech is education and technology. It's a combination of two words. Edtech has taken a jump of around 5 years during this corona pandemic time. So it is everybody, even a small vendor is using the smartphone, all the things are on online. So we need to be very careful. Individuals share personal and work related information on internet critical. Say somebody asks you, what is your card number? Okay, what we do, we click the photo of the card and we share it very easily. Never ever do this. Never ever do this. Financial transaction take place on internet. I will guide you how to do this. Security control are never 100% in educate. Bad guys are always ahead of good guys. So you need to be very, very careful. It's basically no more of fun. Cybercrime is no more of fun. Now, if you will be indulged in anything, surveillance, cyber cells, cyber crime cells are there. They will track you like anything. Cybercrime controlled by IT Act 2008, which I have already told you, it just comes under the Indian Penal Code. Complete control of government agencies over information stored, processed and transmitted. अभी हमने अगर न्यूज़पेपर देखा हो तो भी ट्विटर के साथ बहुत ज्यादा जंग लड़ी है, बट अब वो ट्विटर मान भी गया है इस चीज के लिए. ये भी सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आता है. अपग्रेडेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई भी चीज होती है, तो यू कांट डिनाई फॉर दैट. सर्विस प्रोवाइडर लाइक ASP, आपके पास कोई भी हो, वोडाफोन हो, जियो हो, एयरटेल हो, एक्सेट्रा, लाइबल टू शेयर इंफॉर्मेशन विद गवर्नमेंट एजेंसीज. अगर आप कहीं ट्रैप में आ जाते हैं तो उनको देना ही पड़ेगा. अपग्रेडेशन ऑफ फोरेंसिक लैब, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट ऑफ साइबर क्राइम्स. अभी अगर हम सुशांत का वो लेते हैं केस, तो उसकी पीछे की सारी चैटिंग और वो सब सारा उन्होंने कहाँ से स्टडी किया, कैसे निकाला. So that means, see, one thing I want to tell you all my young students, that always remember one thing in your mind: whatever you are typing on your social media, it is written private, it is written encrypted, but dear, it is not private. It is not private. Anytime, any kind of data can be leaked. Anytime, especially my special concentration is on girls right now.
Be careful when you are clicking your selfies and sharing with your friends. I'm not saying that don't do this, but share or post your photographs which you feel like that, yes, very handy photographs you can post, very selective pics you can post, wherein you can judge that these are the surroundings and everything. If you will post so many things all together, you won't be even able to remember that what you have posted on last year on the same day. So you have to be very, very calculative. Otherwise, else, there I will be telling you few cases that out of revenge, I'll be coming in onto it. Now, cybersecurity awareness for students like you, curiosity and revenge may be a primary reason for a student to get into a cyber crime. ये दो चीजें बहुत ज्यादा हैं. उसने मुझे क्लास में तंग किया, छेड़ा, मैं अब उसको एक तंग करूंगा या करूंगी एक फेक आईडी बनाकर. Got my point? मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ कि हम क्या कर रहे हैं. हम 5 साल 10 साल की जेल जाने का काम कर चुके हैं, पता ही नहीं होता है उनको, बिकॉज वो ऐसे अपने आप सोचते हैं कि हम तो प्राइवेट है, दिस चैट एंड दिस थिंग इज नॉट विजिबल टू एनीबॉडी. सो गर्ल्स आर मोस्ट फाउंड विक्टिम्स ऑफ अ साइबर क्राइम. यही बात मैं भी आपको कहना चाह रही थी कि यू डोंट बी इनोसेंट. आई बिलीव भाटिया मैम अगर आपको हेड कर रही हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन पावर के बारे में तो वो आपको हर टाइम बताती रहती होंगी. बट बी केयरफुल, बी विजिलेंट एंड बी अटेंटिव. एक बात ध्यान रखना गर्ल्स, हमें जब हम छोटे थे, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा ने कहा था कि बेटा किसी अनजान से कोई भी दोस्ती नहीं करनी, किसी से लेके कुछ खाना नहीं है. अब मुझे सबके यस और नो चाहिए. क्या आपको कभी आपके पेरेंट्स ने ये बोला है जब आप छोटे थे? जस्ट से यस और नो, चैट पे डालिए जल्दी 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 जल्दी. मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग मेरे साथ है और कितने लोग सो रहे हैं. नाइस 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 नाइस. Very nice. So I got answers and they all are saying yes. So that means you all are listening to me if you are giving me the answer. Thanks for this. See, once you say yes, the same phenomena which your parent taught us, which my parent taught us, or for my generation or for ma'am's generation, I'll just tell you one thing, that the same phenomena, the same strategy to be followed on the social media. If you don't know anybody, don't make friends. If you don't know them, don't send the request and don't accept the request. The physical, say, she is my cousin, she is my cousin, or she is my friend, she is the senior, means she is a student of the senior batch, that I'm aware of. If I'm aware of someone physically, if I'm getting some of a request from an unknown person, straight away don't accept. The same phenomena you have to follow. Here I am telling you one very, very important topic. You all are grown up enough, so that's why I have taken this topic called pornography. Cyber pornography covers pornographic websites, pornographic magazines produced using computers and internet. Whoever publishes or transmits or causes to be published in the electronic form any material which is obscene in nature falls under cyber pornography. Section 67, punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form, comes under the section 67 of IT Act. और इसके कारण आपको कितने साल की जेल होगी? 2 से 10 साल की. और फाइन कितना लगेगा? 10 लाख का. तो सावधान रहें, कोई भी ऐसा काम ना करें. Coming on to the next, identity theft. Identity theft ऐसा होता है जैसे कि मेरे पास, दिव्या के पास एक रिक्वेस्ट आई
दिव्या को उन्होंने कहा कि हम आपकी सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, हम आपको कोई 1 लाख रुपए का इनाम देना चाहते हैं। दिव्या इतनी खुश हो गई कि मैम दिव्या ने सोचा कि चलिए मेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे, वो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं मैं दे दूं। अब जो हैकर है उसने क्या किया, जो दिव्या मैम ने सारी इंफॉर्मेशन दी थी उसको उसने अपनी आइडेंटिटी बना ली और वो खुद दिव्या मैम बन के उसने बाकी सबको मैसेज करने भेजने शुरू कर दिए कि भी मैं बहुत गरीबी हालत में हूँ, कोरोना ने मुझे बहुत पीड़ित कर दिया है, आप मेरे को 2,000 रुपए 5,000 रुपए जितना भी दान दे सकते हैं दे दीजिए। तो दिव्या की आइडेंटिटी जो है वो उन्होंने ले ली। So this comes under the section 66C, punishment for identity theft. Whoever fraudulently or dishonestly make use of electronic signature, password, or any other unique identification feature of any other person shall be punished with imprisonment of either description of for a term which may extend to 3 years or shall be liable to fine which may extend to rupees 1 lakh. So identity theft is a term used to refer to a fraud that involves stealing money or getting other benefits by pretending to someone else. जैसे कि डेबिट कार्ड से चोरी, क्रेडिट कार्ड से चोरी, ये तो हम बहुत सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। Section 66D, punishment for cheating by personation by using computer resource, whoever by means of any communication device or computer resource. ये दो सेक्शन है, सेक्शन 66C और सेक्शन 66D। दोनों में ही चीटिंग भी करेंगे डिवाइस लेके तो भी, आइडेंटिटी थेफ्ट करोगे तब भी। और हम इस प्रोसेस को कहते हैं फिशिंग, टेक्निकल भाषा में हम इसको कहते हैं फिशिंग। अभी एक देखिए, फिशिंग पे मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। You've probably seen it. You receive an email from your bank or trusted company, and it's asking you for information. It looks real, but it's designed to fool you into handing over important information. This is a scam called phishing, and you need to avoid it. Most of us have gotten used to doing business online. We buy and sell things. We have accounts with sensitive information. The risk of doing business online is low, as long as you deal directly with organizations you trust. Problems occur when criminals impersonate these organizations and fool you into handing over sensitive information like account numbers, passwords, and PIN numbers. The key to avoiding this scam is awareness. Here's one example. You receive an email that looks like a trustworthy message from a bank. It asks you to click a link to verify information. You assume it's legit, so you click the link and log into what appears to be your bank's website. At this point, the scam is complete. You've handed over your bank password to the crooks who can use it to take your money. Boo! They were able to fool you by impersonating the bank's website. There are a few keys to detecting phishing emails. They often try to scare you by saying your account has been accessed or security has been compromised. They also insist that you click a link to verify information or fill out a form. Do not click links or fill out forms in suspicious emails. The email may also have misspellings and call you something like valued customer. The crooks don't know your name. Remember, phishing emails may use the exact same logos, phone numbers, and addresses that appear on your statements or bills. Always be suspicious of an email that asks for your information. No exceptions. If you receive a phishing email, stay calm. There's no risk to receiving it. Just delete it. You can also safely report it by forwarding it to reportphishing@antiphishing.org or spam@uce.gov. If an email does lead you to a suspicious website, remember to look at the web address. The address in your browser should look familiar. If you suspect that criminals have your information, immediately contact organizations where you have accounts. To protect yourself in the long run, you might also consider anti-phishing software. Further, check your online accounts and credit reports regularly, and quickly report anything that is out of place. Phishing scams are a growing threat on the internet. By being aware of the scam, you can feel confident in working with companies online. Yay!
I believe this has made you understand what is phishing and how important is to you to aware about that nobody is just taking or fiddling with your identity. Now, email spoofing. Email spoofing is basically spoof email is one that appears to originate from one source that has been sent from another source. Now, बेसिकली जब हम बात करते हैं इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगी कि मैंने एक चिट्ठी लिखी है, ईमेल भेजी है, वो चिट्ठी मुझे भेजनी थी, मैंने अपने पते से नहीं भेज तो दिया है, बट वो मेरा जो वो पता है वो मेरा पता ही जाली है और मैं रहती कहीं और हूँ और मैंने किसी और पते से किसी और को चिट्ठी लिखी. So this is known as email spoofing and this comes under ITA 2008 section 66A, 66C, 66A punishment for sending offensive messages through communication service and 66C take care of punishment for identity theft. A spoofed mail is one that appears like कि भी ये वहीं से ही आई है. फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आरबीआई से आपको मेल आ गई है कि आप, ये बहुत पीछे कॉमन हुआ था कि आरबीआई से मेल आई है कि आप 10 लाख रुपए जीत चुके हैं, 1 करोड़ जीत चुके हैं. बहुत अच्छा इस पे आया था, तारक मेहता पे एक सीरियल भी आया था इसके ऊपर बहुत समय पहले. चलिए, कॉमन सिनेरियो नाउ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम. नाउ सी, आज मैं आपको ये पीपीटी दिखा रही हूँ या आपको आपकी मैम ने कोई काम दिया, कोई असाइनमेंट दिया. नाउ ऑल व्हाट वी आर डूइंग, हम एक आदत में आ गए हैं कि यहाँ से लिया, मैम ने काम दिया है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, 2 पिक्चर यहाँ से ली, 2 पिक्चर यहाँ से ली और कॉपी पेस्ट करा और काम मैम को भेज दिया. तो मेरे बच्चों ये चीज ध्यान रखो कि एक काम जो मैंने बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पीपीटी खुद बनाई, ठीक है. अब इसकी जो पिक्चर्स दी हैं वो मैंने freepik.com से ली है. freepik.com मतलब होता है कि वहां पे सारी पिक्चर्स ऐसी मौजूद होती हैं जहां पर से मेरे को कोई कॉपीराइट नहीं लेना पड़ता. आप कभी कभी देखते हैं जब आप पिक्चर्स खोलते हैं, जब गूगल पे सर्च करते हैं तो उस पर शटर बॉक्स ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर उसको कवर किया होता है. वो सारे एक्ट में आते हैं कि भी आप किसी की भी कोई भी चीज को नहीं यूज कर सकते हैं. दिस इज व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल कि आपने कोई भी चीज जो कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपनी, उस पे वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है. आज अगर मैं ये पीपीटी आपको देती हूँ तो मैं अपने एक लीगल नोटिस बना के दूंगी कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये आप मेरे से ले सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं. तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है. आप जो भी असाइनमेंट बनाएं, जो भी काम करें, हमारे को सिखाया गया है कि नकल के लिए अकल का प्रयोग करें, ठीक है. तो आप करें, वो तो मुझे मालूम है कि आप करेंगे, घर बैठे हैं, टाइम पे तो काम हमने करना नहीं है, अगर मैम ने दिया है तो हम करेंगे तो सही नकल, पर हम उस नकल के लिए थोड़ा सा अकल का प्रयोग भी करेंगे, ठीक है. Now, IPR, the intellectual property crime includes software piracy, copyright infringement, trademark violations, theft of the computer source code. Then comes to the motivation for the IP crime is high as it is easy and cheap to steal someone's IP. Very बहुत आसान है जी, खोला ही गूगल खोला, कॉपी किया, पेस्ट किया, काम हो गया. Owners and creators are at huge risk. अब जो ओरिजिनली बनाता है उसका तो कहीं नाम ही नहीं आया. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पोएम लिखी, मेरी पोएम लिख के मैंने ऐसे ही डाल दी, मेरी वो पोएम मैंने अपनी फ्रेंड को भेजी थी, मेरी फ्रेंड ने वो पोएम लेके किसी पब्लिशिंग हाउस को दे दी, उन्होंने छाप दी उसके नाम से. अब व्हाट इज द प्रूफ कि वो पोएम मैंने लिखी है, नाम तो मेरी फ्रेंड का आ गया. तो आपको इस चीज के लिए हमारे देश में भी इतनी जागरूकता नहीं है, पर बाहर जैसे स्पेशली मैं यहाँ अमेरिका मेंशन करना चाहूंगी, वहां वो कुछ भी करते हैं. इवन हमारा ही योगा है, उसको जरा सा ब्रेन योगा बना दिया, उसको पावर योगा बना दिया और उसका कॉपीराइट ले लिया. तो आप ये देखिए कि वो कितने इंटेलेक्चुअल वे में ये काम कर रहे हैं. अब एक मैं यहाँ आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगी और मैं ये कहना चाहूंगी अब दोबारा, आई एम नॉट हेयर टू स्केयर यू, आई एम हेयर टू अवेयर यू.
I'm just giving you one illustration here. A software professional from Bangalore was booked for stealing the source code of a product being developed by his employees. He started his own company and allegedly used the stolen source code to launch a new software product. अब ये देखिए, अगर आप ऐसे किसी से लेकर किसी का देंगे तो ऑटोमेटिकली आप किस में आ जाएंगे, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट क्राइम के आप भागीदार हो जाएंगे. In 2003, I'm giving you one more example. A computer user in China obtained the source code of a popular game Lineage from an unprotected website. This property code was then sold to several people in 2004. One of those people has set up a website called with this name to offer Lineage. So ये देखिए कितना ज्यादा फैल चुका है, ये तो और हो चुका है कोरोना के टाइम में. Now comes to cyber defamation. Now defamation takes place with the help of computers or the internet. Any person who sends any means of computer resource by any means, any information that is grossly offensive or has a menacing character. For example, मुझे एक मेरे फ्रेंड से बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो मुझे बहुत टीज करता है और सबसे बढ़िया तरीका है उसको क्या करना, डिफेम करना. और उसके लिए कुछ नहीं करना, 2-4 फेक आईडीज, ईमेल आईडीज बनाई, इंस्टाग्राम पे और सब पे बनाया, एंड देन आई स्टार्टेड एनी इलेक्ट्रॉनिक मेल और सब कुछ. एंड दीज ऑल आर पनिशेबल है ये सारी. इसका मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स दूंगी यहाँ पर. मैं आपको हर चीज के एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ बेटा दैट यू मस्ट अवेयर ऑफ. अगर और ये पुराने एग्जाम्पल है, नहीं तो मैंने लिए ही नहीं, नहीं तो अब बहुत और लेवल हाई हो चुका है. और कुछ तो अभी बंद हो गई है जिसका मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है. बिकॉज एवरी चाइल्ड इज इन होम, they are all they are confined in the 4 walls. You have gadgets in your hand, and everybody now say as we have increased the use of the internet, the cyber crime has increased around more than 90%. First example I'm giving you, Abhishek, a teenage student, was arrested by Thane police in India following a girl's complaint about tarnishing her image in the social networking site called Orkut. Abhishek had allegedly created a fake account. उसने क्या किया, वही जो मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि उसने एक फेक अकाउंट बनाया. बनाने के बाद उसकी प्रोफाइल पे बहुत सारे सबको नंबर दे दिया, सबको भेज दिया. और फिर जब पता चला, फिर पुलिस ने ट्रेस किया, साइबर सेल में उन्होंने दिखाया. एक तो यहाँ ये एग्जाम्पल है, इसके अलावा कुछ मॉफ्ड इमेजेस का भी एग्जाम्पल है. औरंगाबाद bench of Bombay High Court has issued a notice to Google.com following a public litigation initiated by young lawyer. The lawyer took exception to a community called We Hate India. So there are so many cases. हमारी दिल्ली का एक एग्जाम्पल भी यहाँ मैंने मेंशन किया है. स्कूल के बच्चों में भी आजकल बहुत ज्यादा, आप तो फिर भी बड़े हो गए कॉलेज में, बट आजकल 6-7, बिकॉज मैं एम हेडिंग स्कूल, मुझे मालूम है. गर्ल्स फैमिली जब ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स और उसके बारे में गलत फैला दिया उन्होंने बच्चे के बारे में, तो उसको कॉल्स आने लगी और ये सारा जब हुआ तो उन्होंने साइबर सेल में रिपोर्ट किया. एंड देन दे केम टू द नो कि भी किसी ने अपना रिवेंज लेने के लिए, गुस्से के लिए नॉर्मली ये काम किया है. तो इसके आगे बढ़ते हैं. वेब डिफेसमेंट. वेब डिफेसमेंट इज यूजुअली द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल होम पेज ऑफ अ वेबसाइट विद अनदर पेज. अब यहाँ बात करते हैं बहुत ही अभी जब पीएम ने कोरोना फंड जब बनाया, एक अभी आरोग्य सेतु ऐप बनाई, तो अभी बहुत ही जल्दी उसकी कॉपी भी बन गई और जो डोनेशन पीएम फंड में जानी चाहिए थी वो झूठे लोग लेके चले गए. क्या आप इस बात को जानते हैं? यस और नो? यस और नो? न्यूज़पेपर में था, सब जगह था, फिर सबको भेजने पड़े मैसेज कि भी. वेरी गुड बॉयज.
So we all have to be very, very vigilant. We have to be very, very active. We have to be very, very particular about it. And whatever site we are opening, जैसे कि मैं नेट बैंकिंग करती हूँ, तो मैं नेट बैंकिंग करते वक्त एक्चुअल HDFC बैंक पे ही जा रही हूँ या नहीं। और एक चीज और है, आप जब भी कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करें, ऑलवेज रिमेम्बर आप उसको इनकॉग्निटो मोड में करेंगे। इनकॉग्निटो मोड आपको मिलता है वहां पर, सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपने वहां पर करनी है। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, दूसरा आप पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं। महेश महात्रे एंड आनंद, देयर आर 2 person were arrested in 2002 for allegedly defacing the website of the Mumbai cybercrime cell. They had done the password cracking of the user software to crack the FTP password for the police website. They then replaced the homepage of the website with the pornographic content. क्योंकि कोई साइबर सेल पे जाने की बजाय pornographic content पे चला जाए, उन्होंने ऐसे किया। The duo was also charged with the credit card fraud for using 225 credit card numbers, mostly belong to American citizens. उनका काम ही यही था। एक्चुअली क्या है, लगता है कि इजी मनी है, थोड़ा सा जिसके पास दिमाग है वो ये काम में लग जाता है आजकल, बट वो ये नहीं जानते हैं कि जैसे अगर आप स्मार्ट हो रहे हैं तो आपसे भी आगे, वो कहते हैं ना, आपके आगे कोई ना कोई होता ही है सवा शेर जो आपको ट्रैप कर ही लेगा। हमने बहुत सारी मूवीज में डायलॉग सुना है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो आप बचेंगे नहीं उन लंबे हाथों से, ये मान के चलिए हमेशा। Now, email bombing. This is also a kind of a one term which I am telling you right now. Email bombing refers to the sending many emails to the victim, resulting in the victim's email account or mail server crashes. This is कहते हैं denial of service attack कहते हैं। इतनी मेल्स भेज दो, इतनी मेल्स भेज दो कि उसका वो क्रैश हो जाए। ये भी हम किसी भी कंपनी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, किसी को बंद करने के लिए, और अगर हम इसमें गिल्टी फाउंड होते हैं तो इसमें 3 साल की जेल है। See, students, my dear students, I'm just telling you the terms here which you might be aware of and you are not aware of. I'm not in this I don't have this much of knowledge that what is your knowledge level for regarding this. But I just want to share one thing. These are the small terms which are related to the cyber security, cyber crime, and which you all should aware of. Here I'm giving you one example of email bombing here. In one case, I'm just giving you a foreigner who had been residing in Shimla, India for almost 30 years, wanted to avail a scheme introduced by Shimla Housing Board to buy a land at the lower rate. When he made an application, it was rejected on the ground that the scheme was available only for the citizens of India. He decided to take this revenge. Consequently, he sent thousands of mail to Shimla Housing Board and repeatedly kept sending emails till the server crashed. तो काम होते हैं, देखिए जो मैंने आपको समझाया था, मोटिवेशन वहीं से आता है। या तो आप काम लोभ के लिए करेंगे या भोग के लिए करेंगे, दो ही बातें हो सकती हैं। तो उन्हें गुस्से में ये काम किया। Now coming on to the next, spreading virus. This is again a very big trouble. बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हमें वायरस हम स्प्रेड कर सकते हैं। ईमेल मैसेजेस, कोई इन्फेक्टेड वेबसाइट्स पे चले गए आप, हम क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे जो आजकल क्या करते हैं, फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस और लिंक आते हैं विदाउट इवन गिविंग अ थॉट कि जो ऐड आ रही है, कुछ भी आ रहे हैं। somebody was showing me day before yesterday, देखो इससे ना आपका पता चल जाता है, फ्यूचर पता चल जाता है एंड समथिंग लाइक दैट, इसको क्लिक करो और वहां चले जाते हो। मैंने कहा इससे फ्यूचर नहीं पता चलता, उससे उसको ये पता चलता है कि आपकी क्या आइडेंटिटी है। डोंट क्लिक ऑन इट। So there are number of cases which I used to solve, but you don't have to be, you just have to be use your common sense. कि अगर कोई मैसेजेस आप देखिए, आप किसी भी साइट देखिए, इस वक्त कोई भी वेबसाइट हो वो आपके बिहेवियर को टैप करता है। एआई सबके पास है, एआई टूल्स सब यूज कर रहे हैं। आप प्राइम ये देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं,
हाँ जी बच्चों, जरा बताएं कौन कौन बच्चे नेटफ्लिक्स पे कितने सीरियल देख चुके हैं? बैक टू बैक ऑब्सेशन दिस, जब तक ये सीरीज खत्म नहीं होगी हम बैठेंगे ही नहीं, है ना? सो व्हाट हैपेंड कि जब हम ये देखते हैं तो हमारा पीछे वो एआई काम कर रहा है। और एआई क्या करता है, जब भी आप नेटफ्लिक्स खोलते हो या अपना प्राइम जो भी आप चैनल देखते हैं, Z5 है, जो भी है, सो व्हाट हैपेंड कि होता क्या है कि वो आपको रिकमेंडेशन दे देता है कि इसके जैसी और वीडियोस, इसके जैसे और सीरियल्स या जो भी आप देख रहे हैं, तो वो रिकमेंडेशंस वाले आपको वो ट्रेस कर रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, लाइव एग्जांपल जो आप रोज देखते हैं, जो आप रोज महसूस करते हैं। आपको गूगल पे आप जाइए, आपने सपोज कोई टूरिस्ट प्लेस देखा तो आपको गूगल फटाफट उसके वहां के प्लेसेस के बारे में, वहां के होटल्स के बारे में आपको प्रॉम्प्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर ट्रेसिंग योर बिहेवियर। तो आपके पास वायरस आने के जो तरीके हैं बहुत सारे हो जाते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस, तो आपको ध्यान रखना है। मेरा फोन हैंग हो जाएगा अगर मैं कोई ऐसे, अभी पीछे जी एडिडास की सेल है, एडिडास का डिस्काउंट मिल रहा है, क्लिक करो, एंड पीपल फॉल इनटू दिस प्ले। हमें व्हाट्सएप पे ऐसा कोई, देखिए बेटा, ऑलवेज रिमेम्बर नथिंग कम्स एज फ्री इन दिस वर्ल्ड। ऑलवेज रिमेम्बर दिस लाइन। आपके माँ बाप भी आपको प्यार करते हैं इस आशा से कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे, और माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तो जब माँ बाप आशा रखते हैं तो दुनिया में और कोई तो आपको फ्री क्या देगा? इसलिए ऑलवेज रिमेम्बर दिस वन लाइन, नथिंग कम्स एज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो फ्री वाला जहां पर मैसेज आ जाए कि फ्री है और चले जाइए और ये करिए, नेवर एवर क्लिक ऑन दैट। वो ट्रैप है, आपको वहां पर कोई ना कोई कुछ होगा वहां पर। इंस्टेंट मैसेजिंग, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, वायरसेस आने के बहुत सारे तरीके हैं, मेल्स है, मैसेजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आप स्प्रेड करते हैं वायरस तो अगेन इट इज अ पनिशेबल एक्ट, आपको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। VBS लव लेटर वायरस वाज रिपोर्टेडली written by Filipino undergraduate, and this deadly virus became the world's most prevalent virus, and losses incurred to around $10 billion। उसने क्या किया, एक ऐसा बनाया जिसमें यूटिलाइज किया एड्रेस इन द माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और ईमेल कर दिए सबको, लव लेटर फॉर यू, लव लेटर फॉर यू, लव लेटर फॉर यू, एंड देन इट कम्स लाइक दिस। The creator of Melissa computer virus was convicted in 2008, जिसका 80 million तक का डैमेज आया है। So these are the few I'm just named here. There are n number of viruses, n number of damages, n number of cases are there which I can tell you over here. अब बहुत सारे साइबर क्राइम्स हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग मीन्स कि कोई आपको फॉलो कर रहा है चुपचाप, पीछा करना। पीछा करना मतलब कि जैसे हमें कोई पसंद आ गया है और हमें वो सुन नहीं रहा है कोई भी बात, तो कोई बात नहीं सुन रहा, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। पहले तो हम उनसे बात करते थे, उनके पास जाने की कोशिश करते थे। अब तो पैंडेमिक में तो हम बैठे हैं कमरे में, तो हम उनको साइबर पे फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, फेसबुक पे फॉलो करेंगे, हम उनको फॉलो करते रहेंगे। तो स्टॉकिंग मीन्स पीछा करना। बुलिंग, इंस्टॉलिंग की लॉगर्स, साइबर टेररिज्म, ईमेल बेस्ड फ्रॉड्स, वेब चेकिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग भी बहुत हो गई आजकल। बहुत ज्यादा बच्चे आजकल ये क्रिप्टो करेंसी और इसके ऊपर आ रहे हैं। आपको बेटा भी इसका हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, बिटकॉइन है इसको, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप बीकॉम के बच्चे हैं, इस बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बीकॉम करेंगे 3 साल बाद, आपकी ऑनलाइन मार्केट जो है वो बहुत चेंज हो चुकी होगी, स्टॉक मार्केट बहुत चेंज हो चुका होगा। तो ये सारी फाइनेंशियल जो टर्म्स है, फाइनेंशियल चीजें हैं, इनको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, जानना है और इसके बारे में समझना है। डॉस अटैक्स,
सिक्योरिटी अवेयरनेस। देखिए अभी तक मैं आपको डरा रही थी, मैं आपको बताऊंगी अब कि हाउ कैन यू मेक द डिफरेंस, हाउ कैन यू बी सिक्योरिटी अवेयर। तो सबसे पहले चीज है, अच्छा चलिए मैं अब एक किसी भी बच्चे से पूछना चाहती हूँ, लेट मी हैव व्यू, या दिव्या मैम आप मेरी हेल्प कीजिए बिकॉज यू नो योर स्टूडेंट्स बेटर। मैं कुछ 4 बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि उनका पासवर्ड, जो उनका इंस्टाग्राम पासवर्ड है या उनका फेसबुक पासवर्ड है या उनका ट्विटर पासवर्ड है, जो भी वो सेम है या कैसा है। Students, please answer. मैम डिफरेंट पासवर्ड है। डिफरेंट पासवर्ड है, Different. एक बच्चे ने मुझे कहा डिफरेंट है। They're Okay. writing in मैम the chat डिफरेंट box पासवर्ड है different और password. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, Strong स्पेशल password. रोहित ने कैरेक्टर कहा का। डिफरेंट पासवर्ड है। ओके 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 फाइन, आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम चैट इन चैट बॉक्स दैट यू हैव अ डिफरेंट पासवर्ड। Thank God you have saved your life, because if you have a same password, it is as equal as committing suicide on the social media. So you always remember, even if I have an email account, if I have a bank account in 4 banks, I have to have a different password with the strong password. Different password and having a strong password. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब है कि मेरा पासवर्ड, जैसे कि मेरा नाम, मेरे मम्मी पापा का नाम, या मैं अगर मेरे बच्चे हैं उनका नाम, या मेरे भाई का नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा फोन नंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर हो, एक अक्षर आपका जरूर कैपिटल हो, और ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो जो आपका कोई गेज ना कर पाए, जज ना कर पाए। ठीक है, सेंसिटिव, और हर महीने 2 महीने महीने के अंदर ही आपको पासवर्ड चेंज भी कर लेना चाहिए। और पासवर्ड लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है। और अगर लिख भी रहे हो, अगर आपका दिमाग बहुत ही कमजोर है, पहली बात तो मम्मी को बोलो रोज बादाम खिलाए। और अगर फिर भी नहीं याद रहता है तो एक ऐसी डायरी में लिखो कि जिसको सिर्फ आप पढ़ें। उस डायरी को आप अपने अलमारी के लॉकर के भी लॉकर में रखिए अगर आप लिख रहे हैं तो। स्पेशली इफ यू आर डूइंग एनी नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आप सब ग्रोन अप है, 18 अब है, आप सबके बैंक अकाउंट हो सकते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट इट। सो सबसे पहला हमारा तरीका है कि अपने आप को, अपने पासवर्ड को सिक्योर करें, मजबूत करें। सोशल मीडिया, एफबी, ट्विटर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बी सेंसिटिव इन व्हाट यू अपलोड। ये मैंने बेटा आपको पहले भी बताया है कि you have to be very 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 sensitive. I have used 4 or 5 varies just to tell you that you have to be very very sensitive. Anything, कोई भी कंट्रोल आपने नहीं देना है। इसमें आपको प्रिवेसी सेटिंग्स आती हैं। आप सब आजकल बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं फेसबुक और सबकी प्रिवेसी सेटिंग्स को कैसे सेट करना है। आपने प्राइवेट ग्रुप्स बनाने हैं, कुछ भी करना है, बट ऑलवेज रिमेम्बर कि आपने अपनी कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं देनी है ऐसे सोशल मीडिया पे जो आप लोगों से छुपाना चाहते हैं। आपको एक बहुत अच्छा केस सुनाती हूँ। इसके लिए आई बिलीव कुछ समय तो होगा हमारे पास। I'll be pretty quick. Yes, ma'am. बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक कंटिन्यू, बार- बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। एक बार जो है एक महोदया, एक महिला जी गई कश्मीर घूमने, घर से निकली, गोइंग टू कश्मीर, फोटो खींची फेसबुक पे, वाह वाह वाह, डाल दी। रीच एयरपोर्ट, फोटो खींची, डाल दी। रीच कश्मीर, फोटो खींची, डाल दी। अब बेचारा चोर, इतने मैसेजेस आ गए, पता चल गया कि अब तो ताला लगा है, घर में कोई है नहीं, तो चलिए जरा हाथ साफ कराएं। तो वो वहां पर एंजॉय कर रहे हैं और फोटो डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर चोर ने अपना सारा काम कर दिया। जब कश्मीर घूम के घर पहुंचे तो देखा सब कुछ गुम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक नहीं करना है। आपकी प्राइवेट लाइफ है, वो आपके लोगों तक नियमित है,
मैं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, जिनको आप में इंटरेस्ट है, आपके कोई आपके, ये आजकल ये बहुत बड़ा फोबिया हो गया, स्पेशली गर्ल्स, आई एम नोट एड्रेसिंग टू यू, फोटो खींच के, पता है मेरे को ना 100 लाइक आ गए, यू नो आई एम सो हैप्पी टुडे, आज मुझे 100 लाइक आ गए हैं, सो बी केयरफुल, आई एम जस्ट ड्रामेटाइजिंग यू फॉर यू ओनली। ये 100 लाइक कुछ नहीं है बेटा, ये कुछ भी नहीं है, ये एक देखिए हमें पहले ना बड़ी खुशी मिलती थी, ये एक नशा हो गया है अभी हमारे को। अगर हम केमिकली, अगर आपको बताऊं, एक डोपामाइन रिलीज होती है हमारे दिमाग में जब हम कोई अल्कोहल लेते हैं या कोई तंबाकू लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। वही अब खुशी आपकी सोशल मीडिया एडिक्शन से होने लग गई है। अपने आप को डिटॉक्सिफाई करो, दिन में 1 घंटा, मैंने मोबाइल हाथ भी नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। अब ये वाला मौका आ चुका है, अब ये वाला समय आ चुका है। Do not jail or break or root your smartphones and auto lock features. I believe आप सबको मालूम है ये सब। अपने जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके पेरेंटल लॉक होता है, हम पेरेंट्स बीइंग जितने भी प्रोफेसर सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को ट्रैक कर सकते हैं। देखिए मैं माँ हूँ, मैं यहाँ जानती हूँ, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे पीछे, क्योंकि मैं वाईफाई ही ट्रेस कर लेती हूँ डिवाइस, कौन सी साइट, और हम बड़े आराम से कोई भी साइट को ब्लॉक कर सकते हैं अपने घर पर। जो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इस वेबसाइट पे ना जाए, तो पेरेंटल लॉक होते हैं, बहुत ज्यादा आप यूज कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन टेक एज अ सेफ्टी मेजर्स। फायरवॉल लगा सकते हैं। फायरवॉल तो होती है जैसे हम कहते हैं ना कि भी आपको आने से पहले कुछ ना कुछ यहाँ से छाननी है, जैसे हम चाय छानते हैं, चाय डालने से पहले वो पत्ती छानने के लिए, तभी हमारे पास चाय नीचे आएगी। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट use that filter. Firewall is like a filter which will work as a bridge between you and the information coming to you. ज्यादातर हम इसको राउटर्स पे या अपने मेजरली अपने उस पे ही हम इंस्टॉल कर देते हैं। Coming on to the internet, be smart on using internet. Never visit untrusted websites जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। Never referral links नहीं जाइए, ये मैं आपको जिक्र कर चुकी हूँ। बैड साइट्स पे मत जाइए। मन बहुत करता है पर अपने मन को नियंत्रण, गीता पाठ का बहुत अच्छा अनुभव होगा, और then you will be feeling that बेटा always remember that whenever whatever action you are doing on your device, on your social media, whatever you are searching, it is being traceable. Always remember. And now I take your queries if you would like to. I believe that I have explained and shared the information which you require and which you should know. And I have repeated this line again and again for you that I'm not here to scare you. I'm here to aware you. Be an attentive citizen of this country. Never ever be a kind of never ever do such thing. And आप कभी भी ऐसे आप ऐसे कभी भी कोई कल्प्रिट ना बन जाए कि आपको, I believe somebody म्यूट करिए प्लीज अपने आप को, म्यूट जिस करिए बच्चे की अपने आप आवाज को। आ रही है म्यूट। 700 खाना पीना देके 8 बजे 8:30 9 बजे कॉलेज में अनीता The child, दिव्या मैम म्यूट करिए सबको। यस मैम। अच्छा भावना मैम आप भी म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। अच्छा मैम आप अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही।
कोई प्रश्न है बच्चों की तो वो चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, नहीं तो मुझे अनुमति दीजिए। हाँ जी, हेलो भावना जी, हाँ जी आवाज मैम, आ अब रही आप है? ऑडिबल हैं, अब आप ऑडिबल हैं मैम। हाँ, अगर दिव्या मैम ले लो चैट बॉक्स में 1-2 क्वेश्चंस, उसके बाद थैंक्स करो मैम का ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। और देखिए एंड तक बच्चे पूरे हैं, इसका मतलब बच्चों ने आपकी प्रेजेंटेशन रियली एंजॉय की है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एक अच्छे मैम टीचर का आपका काम आशीर्वाद। होता है एक अच्छा टीचर बनाना। देखिए दिव्या मैम ले लीजिए, अगर चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है तो। एक बच्चे का प्रश्न है कि बच्चे ने पीपीटी अपनी बनाई है और वो अपनी ही बनाकर उसने भेजी है, यही प्रश्न उस बच्चे ने पूछा है। तो कॉम्पिटिशन इट में हैपन दैट दे पब्लिश इट विदाउट माय नेम, सो व्हाट टू डू। बेटा आप जल्दी से जल्दी हमेशा ध्यान रखिए बेटा, कभी भी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा कोई भी काम आप सोशल मीडिया के थ्रू नहीं करेंगे। पीपीटी बनाएं और ईमेल के थ्रू भेजें, क्योंकि ईमेल आपका एक एविडेंस होता है। आप अभी इमीडिएट इसके बाद उसी कंपनी को ईमेल करें उसी पीपीटी की, और उस मेल में ये लिखें कि इस ईमेल के अंदर जो भी काम है वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। आई हैव ऑल द राइट्स ऑन दिस कंटेंट। भावना मैम 1 मिनट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स से अपनी एक बार वीडियो ऑन कर लें ताकि वंदना मैडम और दिव्या मैडम स्क्रीनशॉट ले लें सबके साथ। सारे बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लें, टीचर्स भी कर लें। इज इट ओके वंदना जी? वंदना जी फोटोग्राफ्स ले लीजिए ताकि प्रेस में जा सके कल। मुझे लग रहा है भावना मैम आपको एक बार और बुलाएंगे हम, क्योंकि स्टूडेंट्स ने आपका बहुत एंजॉय किया है। और अगर आपका आंसर खत्म हो गया हो तो फिर नीति मैम को बुला लीजिए। दिव्या जी, शी इज ऑल्सो बिजी, इनकी मीटिंग है अभी। Yes, ma'am. हाँ जी। Thank you so much, ma'am, for giving useful insights on this topic, which is very much relevant in today's digital world. As we all know that cybersecurity is important because it protects all data from theft and damage. It was a very interactive session, and ma'am, you also shared various preventive techniques with all of us. I'm quite sure that everyone present here must have been benefited by the information shared by you. You explained everything in a very simple and interesting manner, and everyone enjoyed it. Now, I invite Neeti ma'am, the co-convener of this webinar, for formal vote of thanks. Neeti ma'am. Good morning to all, and thank you, Divya, for giving me this opportunity. I, Neeti Nagar, convener of this webinar, hereby would like to extend vote of thanks on behalf of Commerce Department GIA of D.A.V. Centenary College, Faridabad. Firstly, I would like to thank our resource person, Dr. Bhavna Chibbar, who had given beautiful insights about cyber security, wellness, and hygiene. Ma'am, your lecture has benefited not only students, but the faculty also. I extend my gratitude and thank you to you for sharing this but fruitful knowledge about cybersecurity with complete presentations and examples. I also want to thank our respected principal, Dr. Savita Bhagat, for her continuous motivation and support. Her inclination toward academic activities is remarkable. Our head of the department, Dr. Rachna Bhatia's consistent hard work and effort are also appreciated. My heartful thanks to my teammates convener, Ms. Divya and Ms. Vandana have put in lots of efforts, and also Mr. Pramod for technical support to make the webinar successful. Last but not the least, all faculty members and students who have joined this journey of knowledge, I want to thank you to all for making this webinar successful and memorable.